So again, if somebody comes late, up to 5 minutes, you can inform me. So let us start our today's lecture, which is regarding the remaining part of unit number 5, that is regarding the Gobar gas plant. Septic tank we have done in our last lecture. Again, a nice sketch of the septic tank which is provided at the outside of the house, and from that septic tank the supernatant liquid is taken out and is either used for the gardening or seepages etc. inside the ground to increase the groundwater table. Now we will learn about the gobar gas plant or the biogas plant. You must have seen somewhere or other in your neighborhood. This is a very nice appliance or the unit which is not only useful for the disposal of the cow dung or other solid waste from the villages or also from the cities, but it is also useful, or the gas that has been produced from this and the manure produced out of the biogas plant or the gobar gas plant is for the rural upliftment. यानी खेड़े पाड़े के लोगों की कुछ ना कुछ in some way or other it is good for their economical upliftment. कुछ आर्थिक इससे इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी क्राइसिस है ना, खेड़े में प्रॉब्लम आता है. अभी तो हो सकता है गैस पहुंच गया होगा हमारा जो सीएनजी है, लेकिन वो यहाँ से निकलने वाला गैस भी हम यूज कर सकते हैं, बायोगैस जिसको बोलते हैं. एंड इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर द क्लीन एनवायरनमेंट है ना. लकड़े वगैरह जलाना, उससे जो धुआं होता है उससे इससे बचत होती है, आपकी खर्चा बचता है, और जो इसमें से खाद निकलता है वो खेतों के लिए बहुत अच्छा है. The materials which can be used as raw material for the production of the combustible gas मीथेन है ना, मीथेन इसमें से प्रोड्यूस होता है. मैंने आपको पहले ही बोला, it is nothing but the anaerobic decomposition of the organic material which mainly consists of the cow dung. Also sometimes the human excreta is also used. So therefore the methane is produced, which is a combustible material, combustible gas, which has a high calorific value of 4400 to 6200 kilocalorie. The materials used as the cattle dung है ना, गोबर जिसको बोलते हैं हम, कैटल डंग फ्रॉम काउ, बुल्स, buffaloes, sheep, pigs, etc. Also human excreta and urine from the latrine. Agricultural waste like the paddy है ना, घास अपने राइस जो होता है, पैडी बोलते हैं हम उसको, धान, धान का कुटा और कचरा जो बचता है, तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट फ्रॉम द पैडी, ग्राउंड नट, शुगर केन, कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा, जो भी झाड़ पाला रहता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द फॉर यूज इन दिस बायोगैस प्लांट. एंड सम फॉरेस्ट लीटर, लीटर है ना जो कचरा रहता है जंगल में का, जो झाड़ पाला जिसको बोलते हैं, पत्ता वगैरह जो है. So that is all. So all this waste material can be used for the decomposition in this biogas plant, which produces the gas, mainly methane, which is very good for the household combustion purpose. जलाने के लिए हमारे घर में गैस वगैरह चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है. इसमें से जो ऊष्मा मिलती है that is very high. It is about 4400 to 6200 kilocalories. Again, as we have discussed, it is nothing but the anaerobic digestion or decomposition. Involves again that acid fermentation and methane fermentation, which we have done earlier. That is the hydrolysis and the methane formation. That is acid fermentation and methane fermentation. ठीक है, यानी वो जो आपने डाइजेशन टैंक हमने जो पढ़ा,
and the principle behind that. You can use for your exam the same principle. यदि डाइजेशन टैंक के ऊपर एक नोट आती है और बायोगैस प्लांट पे आती है, तो यू कैन यूज द सेम फिलोसॉफी और राइटिंग बोथ वेज, दोनों तरफ एक जैसा ही आप लिख सकते हैं। जिसको मैंने पहले बोला कि भाई एसिड फर्मेंटेशन, उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कलीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज एनारोबिक बैक्टीरियाज, and in the second stage that acid fermented or fermented acid is further converted into gas and the water H2O, ठीक है, and that gas consists mainly of the methane and the carbon dioxide. So that is called as the methane fermentation. So acid fermentation and methane fermentation. The effluent of biogas plant, यानी ये बायोगैस प्लांट में से, या जिसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज में वी कॉल इट एज ए गोबर गैस प्लांट, आफ्टर decomposition of that sludge we call, that is the cattle dung, gobar. Also if we use the human excreta, no problem, है ना, हमारे घरों में जो टॉयलेट्स वगैरह रहते हैं वहां का वेस्ट है, यूरिन का वेस्ट है, so we can use that also for this biogas plant. So after decomposition of this, the remaining material or that sludge is a very good organic manure, or the effluent of the biogas plant is a very good organic manure, बहुत अच्छा खाद है वो, which has enriched nutrients, उसमें बहुत nutrient है for the plant growth, and humus, वो खाद ही बोलेंगे, and humus material which contains the potassium, which contains the calcium, nitrogen, to improve the soil structure for aeration. यानी उसमें इतना खाद है, साथ में सब पोरस मटेरियल है कि जो सॉइल का एरेशन होने के लिए बहुत अच्छा है. So this is therefore we have said that this biogas plant is very good not only to solve the energy crisis but also for the rural upliftment. खेड़े में जो हमारे काश्तकार भाई लोग हैं उनके इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है. These are the two photographs that are shown. You must have seen somewhere or other. आपने कहीं ना कहीं तो भी ये बायोगैस प्लांट जरूर देखा होगा, आइदर लेफ्ट साइड का है ना. जनरली हमारे खेड़े में इसी टाइप से रहता है, लेफ्ट साइड में. कुछ यदि प्रिपेयर्ड जिसको बोलते रेडीमेड, जिसको बोलेंगे प्लास्टिक का, वो राइट साइड में है ना. इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो आगे में हम देखते हैं. As we have discussed, it is produced by fermenting biomass. The substrate used for the production of this methane gas usually consists of the crops, corn waste materials such as manure or the food waste, etc. We have seen various waste material or the substrates used. This is the schematic layout of the biogas plant. The biogas is produced by the microbacterial decomposition of that substrate or that material, that is the cow dung, etc., in an oxygen free environment, that is anaerobic condition. For that purpose the substrate or that material consists of the cow dung is pumped into the fermenters, जिसको हम डाइजेशन टैंक या गैस, गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट बोलते हैं. ये जैसे लेफ्ट साइड से है तो वो इन्फ्लुएंट जो है which consists of all that material is flown or pumped. ये ग्रेविटी से ही जाता है, कोई पंपिंग की इसमें जरूरत ही नहीं है. So it is flown by gravity into this tank. It enters this digester tank, and with the anaerobic and then it is stored for some 10 days, 15 days, 20 days to continue the anaerobic decomposition, that is the acid fermentation and the methane or that methane fermentation, gas fermentation, that is the decomposition. The gas holder floating tank is at the top. एक डोम रहता है हल्का, वो गैस को पकड़ने के लिए रहता है, जैसे क्योंकि गैस इज लाइटर देन द लिक्विड एंड द एयर, इट मूव्स अपवर्ड्स, it lifts that dome, and
then the gas is supplied to the household purposes or for the purpose for which that gas is being used, and the remaining material into this digester tank is taken out as an effluent and a very beautiful manure from the right side. ठीक है, राइट साइड में जो बताया गया है, you can see the level of the influent liquid, the level inside the tank of that influent, and the effluent level which is coming out of the tank, है ना. नीचे का जो मटेरियल है वो जैसे जैसे ये डिकम्पोज होने के बाद में ऊपर का सुपरनाटेंट लिक्विड इज टेकन आउट, विच इज ए वेरी गुड मैन्यूअर. So in this way, the biogas is produced, it rises to the top and is being used. In our India, there are various models used for this biogas plant. They are the KVIC model and the Janta model. That is खादी एंड ग्रामोद्योग का एक है और एक गवर्नमेंट से ही ये है, एंड देयर आर लॉट ऑफ द सब्सिडीज एंड फंड्स बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, so this is that KVIC model shown here in on your screen right side. Again from the left side, left part, inlet part से वो all that cow dung or that substrate material which consists of the cow dung, the fermented leaves of the plants, and all that waste material is pumped or is thrown with the water inside this tank, which is circular in plan. अंदर आने के बाद में इसे डिकम्पोज होने देते हैं with the anaerobic bacteria which are there. Again the same process which we have discussed earlier. After decomposition of the organic matter with the anaerobic bacteria, gets converted into the water, which is taken out as the effluent along with certain material, decomposed material which contains good quality manure, and the another part gas is taken out from the top dome and is collected and is given to the kitchen. Okay, so this is the, in short, the working of the biogas plant or the gobar gas plant. Simple, like the digestion tank, anaerobic decomposition. Its ingredients are the cow dung, the waste from the agricultural waste, maybe human excreta, urine, etc. It is taken by mixing with water into this tank from the inlet part, allowed to decompose for certain period, 10 days, 15 days, and is taken out from the outlet pipe. The decomposed material by the anaerobic bacteria consists of water and methane. This water also contains certain material which is like a manure, which contains the humus and the other potassium, calcium, etc., and some organic material which could not be decomposed by the anaerobic bacteria, but they are good as a manure and they are not dangerous for the human. Okay, so that is overall the working of the biogas plant, gobar gas plant, and its sketch in short. ठीक है, digestion tank and the biogas plant working is the same. Now we will move on to our last part or second part of this unit, which is regarding the industrial wastewater treatment. We have learned earlier from the beginning that the sewage consists not only the domestic waste, but it also contains the industrial waste also. Okay, and as a environmental engineer or the civil engineer, it is our duty to look after the waste water treatment from the industry, because this industrial waste contains
very important physical and chemical parameters or properties which are harmful if they are not treated, or that untreated waste from the industry is let out into the either flowing water or disposed of along with the domestic sewage, may cause the problem to the treatment plant, etc. So various methods are there. So now the various characteristics of the industrial wastewater, we have seen the characteristics of the domestic wastewater, the physical, chemical and biological. They are also same, but bit chemical properties because the waste is from the industry. So lot of the inorganic, maybe sometimes toxic material is there, which is produced in the various industries like the steel plant, like the cloth plant, like the tanneries, like the paper industry. है ना आप, some of you are from the बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, उसका वेस्ट एक अलग ही रहता है. So it cannot be easily generalized as in the case of the domestic wastewater. डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में एक ही टाइप का वेस्ट आएगा, which is from the human waste or from the society, from the house to house. But the industrial wastewater cannot be uniform because it consists of the waste from various industries. But it varies with the type of the industry and also plant to plant. Okay, because there may be some thermal power plant, there may be from the steel plant, maybe certain acid or chemical production plant, civil engineer may admixture or the chemical production plant, paper mill. Every industry uses different chemicals and produces different waste, producing ultimately plant to plant, जो अलग अलग plant है, producing same type of the end products, and that depends upon actual manufacturing process in the industry. तो क्या करना चाहिए फिर? The pollutants in the industrial sewage or the wastewater consist of the raw materials, the end products, यानी जो इससे raw material यूज करके वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चालू किया है, कहीं कोई पेंट की इंडस्ट्री है, कोई कलर की इंडस्ट्री है, सो दे यूज वेरियस सिंथेटिक मटेरियल्स. एखादी ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है, एखादी गैस की इंडस्ट्री है, सो द वेरियस रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड. So in the waste also some component of those raw materials will be produced. End products, आखिरी का जो रॉ मटेरियल यूज करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो भी शायद उसमें रह सकता है वेस्ट में. ये दोनों बनाते वक्त बीच में कोई केमिकल बना है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, प्रोसेस इंटरमीडिएट, दैट इज ऑल्सो देयर इन दैट वेस्ट. समटाइम्स प्रोसेस बाय प्रोडक्ट्स आर देयर, है ना, जो रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट करते वक्त कोई एक आधा बाय प्रोडक्ट बन गया, वो भी है. एंड द केमिकल्स आर आल्सो देयर इन बिटवीन, समझो कोई कैटलिस्ट एक्सेट्रा वी आर यूजिंग, सो दोज आर आल्सो देयर. सो द ह्यूज टाइप ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर देयर. There are certain organic substances that deplete the dissolved oxygen, like the domestic waste content of the stream in which the industrial waste are disposed of. These organic substances impose greater load on the biological unit of the treatment plant. ये जो ऑर्गेनिक लोड है, ये यदि हमने कम करके नहीं डिस्पोज ऑफ किया तो जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर वो काफी लोड देगा, है ना. ये सर आवाज नाही येत आहे. सर माईक ऑफ आहे सर तुमचं.
हा आता येतोय का हॅलो. आवाज? हो सर, आता आमच्या इथे. तर there are certain inorganic substances. We were discussing the characteristics of the industrial wastewater. The pollutants in the industrial sewage may include the raw material which are used for the industrial waste, the end product after the production of the industry. जो एंड प्रोडक्ट है उसका भी कुछ मटेरियल उसमें रह सकता है. पेंट बनाते हैं तो सम पार्ट ऑफ द पेंट इज आल्सो देयर इन द एंड प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट के बनाते बनाते बीच में कोई मटेरियल बनता है जिसको इंटरमीडिएट बोलते, वो भी होगा. कुछ बाय प्रोडक्ट भी इसमें बनेगा, वो भी वो वेस्ट वाटर में आएगा. और कोई केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो वो भी आएगा. सो ऑल दीज मटेरियल्स एंड इफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर देयर in the production process and if those are not properly disposed of, और ये यदि हम ऐसा आसपास के बहते हुए नदी में छोड़ देते हैं या एखादे तालाब में छोड़ते हैं तो वहां का भी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम करेगा and will pose problem to the aquatic life. Friends, you all must be knowing, we have been discussing it again and again I will be telling you this is a very good uh, subject or very good if you do further study for the environmental clearance. आज हमारे यहाँ पे गंगा पोल्यूशन और द गंगा क्लीनिंग, गंगा शुद्धिकरण प्रोजेक्ट चालू है, यमुना है, बहुत सारी नदियां है. और ये हमारा प्रॉब्लम है अभी कि द गुड वाटर इज बीइंग, गंगा में जैसे देर आर लॉट ऑफ द सिटीज विच आर अलोंग द रिवर गंगा, लाइक दी हरिद्वार से चालू हो जाता है, बाद में वो लखनऊ आता है, कानपुर आता है, इलाहाबाद है, काशी है, बनारस है, और बिल्कुल आखिरी में कलकत्ता के तक के. और हर जगह पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. कलकत्ता में जूट फैक्ट्रीज है, क्लॉथ फैक्ट्रीज है. ऑल दिस ये क्या करते हैं, दे ऑल डिस्पोज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर एंड द रिवर इज गेटिंग पोल्यूटेड. और बाद में बाकी तो डोमेस्टिक वेस्ट है. सो देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी that before disposing the waste into the river or any water body, it is necessary that it is to be treated properly. तो इसलिए हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में है जैसे कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, MPCB है ना, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल पे भी है. महाराष्ट्र में कोई भी इंडस्ट्री चालू करना है किसी को, कोई भी एनी इंडस्ट्री, they have to get clearance from the महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और उनको पूरा ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में से वेस्ट बाहर फेंकने के पहले, वो सब उनको प्लान सबमिट करना पड़ता है. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंडस्ट्री दे हैव टू शो टू दोज MPCB ऑफिशियल्स. सो अगेन two opportunities of the job are there. Either you can work in the MPCB through the Maharashtra Public Service Commission, MPSC. उसमें अपॉइंटमेंट होते हैं सब, जूनियर इंजीनियर से लेके तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आगे में भी होते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन बी ए कंसल्टेंट फ्रॉम द फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज एज ए ट्रीटमेंट एडवाइजर और द डिजाइनर. ठीक है, दोनों तरफ से जॉब है और बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मैं बताता हूँ आपको. द इनऑर्गेनिक, अब आगे चलते हैं हमारे सब्जेक्ट में. ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हमने डिस्कस किया. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक द कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स also they need to be taken care of before leaving out into the water body, because if they left untreated it is unfit for the further use and encourage the growth of microplants in the body of water. ऐसा बहुत बार हम देखते हैं हमारे यहाँ की अच्छी अच्छी नदियां, जैसे मैं यहाँ पुणे में हूँ, मुड़ा मुठा नदी है, पूरे मस्त पुणे के सेंटर से बहती है. नागपुर से नाग नाला हम अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, बट इट इज ए स्मॉल नाग रिवर. एंड ड्यू टू दिस वेस्ट कंटेनमेंट बहुत उसके ऊपर वो झाड़ी पत्ती आई है, ग्रोथ ऑफ द माइक्रो प्लांट्स, एंड इट हैज कवर्ड द वाटर ऑफ दैट मुड़ा मुठा रिवर इन द पुणे.
ऑल दैट इज ड्यू टू द पोल्यूशन, और फिर हम उसको निकालने के लिए बहुत खर्चा करते हैं. So the initially, if we take care of the acids and alkalis, if untreated and left, which endanger the growth of the fish and the other aquatic life, and also cause difficulties in operation of the treatment plant. ये एसिड्स रहते हैं, अल्कलीज आते हैं, रहते हैं इनऑर्गेनिक, है ना, सल्फेट, H2SO4 है, HCl है, बहुत सारे इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के एसिड यूज कर सकते करते हैं. सोप की इंडस्ट्री है, साबुन की है तो अल्कलीज है, बैटरीज है तो एसिड्स है. So all these results into the growth of the aquatic life, that is the fish, etc. The toxic substances, कुछ विषारी भी पदार्थ है, such as the sulfides, cyanides, very dangerous, acetylene, alcohol, petrol, which cause damage to the flora and fauna of the receiving stream. जो नदी है उसका पूरा जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसमें उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला, यानी सब एक्वेटिक लाइफ है, आजू बाजू के झाड़ पत्ती है, जंगल है, वो सबको वो खराब करता है. ऑल दिस एंड ऑल्सो अफेक्ट द ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी ये यदि इफ इट कम्स इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो आपके शुरू से लेके स्क्रीनिंग, ग्रीटिंग, सेडिमेंटेशन, aeration and all that primary secondary all gets affected due to these chemicals. And unfortunately it also creates danger to the persons who are working there, safety of the workman. Or unfortunately if the aquatic life, जैसे मछलियां है और उसमें झींगे है और कुछ है, वो ये पदार्थ कंज्यूम करते, इफ दे कंज्यूम ऑल दिस मटेरियल्स, सो इट रिमेन्स इन देयर बॉडी एंड वी ह्यूमन कंज्यूम दोज एक्वेटिक फिश एक्सेट्रा, तो हमारे लिए वो और डेंजरस हो जाता है. या इसके ऊपर से कोई सब्जियां बनती है आजू बाजू में, तो वो यदि हम खाते हैं तो वो हमारे लिए और धोखादायक होती है. और आप सबको मालूम है कि इसके ऊपर में हमारे नागपुर में ही काफी सब्जियां नाग नाला का जो वेस्ट है उसके ऊपर से बन के आती है, अनफॉर्चुनेटली. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस लाइक द डाइज, है ना. बहुत सारे इंडस्ट्री में रंग यूज करते हैं, कपड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, द क्लॉथ इंडस्ट्री, द कॉटन इंडस्ट्री, वेयर द डाइज आर कलर्स आर यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री. So those dyes to some part 100% नहीं यूज होते हैं, some is wasted. They also damage the waste aesthetically, यानी दिखने में भी खराब दिखते हैं, and also the chemical properties, oils, fats, greases, other floating substances from the various automobile industries etc. या बाकी कहीं से भी, they also make the streams unsightly and interfere with the self purification of the same. These substances gives the treatment operations difficult. ठीक है, ऑयल, फैट और ग्रीजेस इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है. कहीं से तो भी फैक्ट्री से आते हैं ऑयल, कहीं एक आधे डालडा की फैक्ट्री है, या कहीं हमारे घरों में हम तेल वगैरह यूज करते हैं, वहां से सम फैट्स आते हैं, ग्रीजेस है. दे फ्लोट ओवर द वाटर, द वेस्ट वाटर, and they are made up of such organic material which cannot be decomposed by the bacteria. anaerobic और aerobic bacteria से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, और ये यदि ऐसे के ऐसे ही यदि ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाते हैं तो ये फिल्टरेशन मटेरियल है या और सब बाकी, इसको they create the problem and they reduce the capacity of the treatment plant. So therefore the scum tanks etc. are very important for removal of this. Now the basic principles of the treatment of the industrial waste, है ना. ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन आता है और हमें मालूम रहना चाहिए कि the first part we have learnt about the various ingredients of the industrial waste and the problems posed by them. Now the principles of the treatment. Depending upon the way in which industrial waste are discharged, the nature constituents and the treatment may consist of any or the more following processes. यानी उसके ऊपर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है
उस पर से हम उसकी ट्रीटमेंट, reduction of volume and the strength. As far as possible, we will try to reduce the volume of the industrial waste from the individual industry itself. यानी जो जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है वहां से ही कम से कम वेस्ट निकले और उसकी स्ट्रेंथ कम हो, यानी वहां पे ही ट्रीटमेंट दे. इसलिए तो वो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है. मैंने आपको जो बोला कि इट लुक्स आफ्टर दैट इंडिविजुअल इंडस्ट्री. नहीं चालू है तो that therefore that reduction of the volume and the scent, segregation of uncontaminated waste from the contaminated waste, again this is to be done at the industry level. Conservation of water, पानी का कम से कम यूज हो. Implementing process changes to minimize the waste. Reusing treated waste water for process requiring lesser quality of water. यानी जो इंडस्ट्री में पानी है उसको ट्रीट करने के बाद फिर से यदि उसको यूज कर सकते हैं तो वेरी गुड. रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ बाय प्रोसेस चेंजेस, स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट कम कर सकते हैं यदि हम हमारे इंडस्ट्री की जो यूनिट्स है, जो उसके अंदर में प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसके प्रोसेस में कुछ रिपेयर करें, कुछ नया लाया लेटेस्ट. प्रोसेस चेंजेस, इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, सेग्रीगेशन, इक्वलाइजेशन, बाय प्रोडक्ट रिकवरी एक्सेट्रा. ठीक है, वी विल सी फर्दर. नाउ द वेरियस मेथड्स adopted which are included in our syllabus, depending upon the quantum, means quantity of the industrial waste, concentration, that is strength of the industrial waste, toxicity यानी वो कितना विषारी है, टॉक्सिक यानी विषारी, presence of non-biodegradable organics in the wastewater, like that again soap, grease, oil, etc. Its treatment may consist of any one or more of the following processes. First is the equalization, neutralization, proportioning, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, और ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. वही है ना, जो दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्सेट्रा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी में we apply the same for the industrial waste also. But what are this equalization, neutralization, proportioning, physical and chemical treatment? Physical chemical भी आपको बहुत सारे आइडिया है. This is nothing new we are learning in industrial wastewater treatment. Whatever knowledge we earlier have, the treatment processes, only how it is applicable for reducing the strength of the industrial waste, that we'll try to understand. Equalization, neutralization, proportioning, etc. A very short note every time comes on this part. Pahla, equalization. Because this industrial wastewater comes from the various industries, as well as the wastewater strength varies in a day also. यानी सुबह कम स्ट्रेंथ रहेगी, दोपहर में एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हमने लिया तो सुबह, in the morning the strength of the waste may be less. In the afternoon, as the work is in full progress, the strength of the waste is more. And in the late hours, in the afternoon and evening, the strength may be less. Also, one industry may contain high strength waste, another may not contain high strength waste or the lower strength waste. So therefore, when this discharge rate is not uniform of the waste or continuous, therefore the waste require the equalization before treatment. यानी क्या करना है, यानी ट्रीटमेंट को या बाहर डिस्पोज ऑफ करने के पहले all this waste produced for the whole day is held or holding the waste for some designed sewage characteristic period in a continuously mixed basin, which produces an effluent of fairly uniform characteristics. Means the industrial waste for
in the morning, afternoon, and evening is put for some time. All these three wastes are put for some time, an hour or two, in a mixed basin, so that uniformity of the property of the waste will be arrived, and then it can be that effluent can be further sent for the treatment. This is called as the equalization. So equalization consists of holding the waste for some designed sewage characteristics for a certain period in a continuously mixed basin, यानी जैसे हमारा सेडिमेंटेशन टैंक रहता है तो उस टाइप से उसको रखेंगे, लेकिन उसको मिक्स करते रहेंगे दिन भर, ताकि हमारा एक जैसा एफ्लुएंट बने, fairly uniform characteristics. This is called as the equalization. Okay, I think everybody, it's very easy to understand. So this is equalization, simple in our syllabus. For us, this much knowledge is sufficient. Now second is the neutralization. If the equalization you have understood, then from neutralization you must have got the idea that when the industrial waste contains certain acidic or alkaline substances in excess, which may pose problem for the further treatment, so then such waste requires neutralization. उसको neutralize करना जरूरी है. Acidic है तो उसको neutralize करके, neutralize करना है ना, again the pH value should be brought between 7 to 9 or 7, 8, 9, 6 to 9 you can say. Acidic है, if it is less than 6, some alkalis is to be added. Alkaline है तो some acid is to be added, so that sewage should be neutralized. This becomes very essential in case of the acidic waste. In the neutralization process, the waste is held in the tank and pH value is adjusted suitably, either by adding alkaline or acidic substances as the case may be. ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं विद द नॉलेज ऑफ द इक्वलाइजेशन एंड द न्यूट्रलाइजेशन. प्रोपोर्शनिंग, अगेन सेम प्रिंसिपल. व्हेन द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ट्रीटेड अलोंग विद द म्युनिसिपल सीवेज, ऐसा बहुत बार होता है. वी डोंट टेक समटाइम्स दैट इंडस्ट्री, इफ इट इज इन द सिटी and if they don't have the separate MIDC, then that industrial waste is mixed with the municipal waste sewage. So therefore it needs, that industrial waste has different property as compared to municipal sewage waste. So therefore it needs proper proportioning, that is some part of the industrial waste and some part of the municipal waste, so that the combination should not pose problem for the further treatment at certain treatment plant like the Bandewadi treatment plant in Nagpur. So the proportioning consists of the control of the discharge of the industrial waste into the receiving stream or to the treatment plant or sewer in a fixed proportion to the flow of the domestic wastewater. This helps not only in protecting the treatment device from shock load, but also improving the sanitary quality of the treated effluent. ठीक है? I think all these statements are very self-explanatory, self-clear. Proportioning means some part of the industrial waste, some part of the sewage waste, domestic waste joined together in proper proportion, that the combination of this can be treated either in treatment plant without any damage to the treatment plant, or this combination can be let out into the flowing stream if it is within permissible limit. So that is and this results in not only controlling the damage to the treatment plant by the shock load. यानी शॉक लोड यानी क्या कि एखादा इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ टॉक्सिसिटी आ गई, ज्यादा कुछ विषारी द्रव्य आ गए, तो वो एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म कर डालेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द शॉक लोड. एंड ऑल्सो द आफ्टर ट्रीटमेंट, दैट ट्रीटेड एफ्लुएंट क्वालिटी can be maintained with the help of this proportioning. So all these three are very important, that is equalization, neutralization and the proportioning.
Now we will move on to the treatment processes. Physical treatment consists of the separating the suspended inorganic matter by the physical processes like sedimentation and flotation. ठीक है. Now with all the other methods you are very well conversant with. आप सबको मालूम है कि ये सेडिमेंटेशन क्या है और फ्लोटेशन क्या है. So sedimentation or the sedimentation tank, हमने primary sedimentation tank, secondary sedimentation tank, how it works and its design we have seen. So it is the sedimentation is used to separate the heavier settleable solids. Hence they are provided only when the wastewater contains high percentage of heavy inorganic solids. Flotation means what we do, it is against flotation process is different than flocculation. फ्लॉक्यूलेशन में सस्पेंडेड मटेरियल को हम एक साथ कलेक्ट करते हैं, वी मेक इट हेवियर देन द वाटर एंड अलाउड टू सेटल with the help of the certain flocculants or the coagulants. But in flotation we apply exactly opposite thing. We create fine air bubble into the wastewater tank by introducing from the bottom by the diffusers etc. And this rising bubble जो पानी में छोड़े हुए बबल है वेस्ट वाटर में, वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो it carries or attaches themselves with the finely suspended particles. They increase their buoyancy or they reduce their weight and lifting them to the liquid surface and bring them at the top surface can be removed by skimming or the skimming tanks, by which the finer particles, oils, greases, fats, etc. are brought to the surface and can be removed. So this is the second flotation process, that is the physical process. Certain chemical treatment, again you are conversant with them. They are the reverse osmosis or hyperfiltration, electrodialysis, electrical oxidation, coagulation or chemical precipitation, adsorption, deionization, thermal reduction and air stripping. We will learn one by one. Reverse osmosis process, wherein the wastewater which contains the salts etc. are filtered through semi-permeable membranes at the pressure higher than osmotic pressure, which results in removal of that dissolved salts. But this treatment needs certain pre-treatment like the activated carbon adsorption and the chemical precipitation followed by some kind of the filtration. So with the help of the reverse osmosis process, the dissolved salts are removed out by filtering through the semi-permeable certain membranes or the plates are there at a pressure higher than osmotic pressure. Then we are not going into much detail of the technology. Just we will try to understand the processes which are helpful. So first is the reverse osmosis, second is the electrodialysis. Electrodes are there. With the help of those electrodes, the electricity is passed from one electrode, positive electrode to negative electrode, in which the dissolved salts, है ना, जैसे हम बैटरी में वगैरह यूज करते हैं. So the dissolved salts from the wastewater is separated by passing an electric current through the wastewater tank installed with ion exchange membranes. This treatment process requires some pre-treatment again, as is required in reverse osmosis process. So with the help of the again electrodialysis, we can remove the dissolved salts. Chemical oxidation, in chemical oxidation, some oxidization materials or the chemicals like the chlorine and ozone are used to reduce the substances like ammonia and cyanide etc. from the wastewater. In addition, they also reduce the BOD load of the biological treatment. Chemical coagulation, just now we have discussed about the chemical coagulation, flocculation, wherein
the raw water which contains the sedimentation or suspension material in suspension, which cannot be settled in the sedimentation tank, maybe in micro and colloidal form. They can be absorbed in the gelatinous floc, है ना, alum वगैरह use करते हैं, formed by the chemical reaction between the coagulants or between coagulant and alkalis present in the raw water. They prepare such material flocculated together to settle into the into that sewage, chemical coagulation. Adsorption is used to remove non-biodegradable organics like synthetic detergents, etc., color and odor from the wastewater. Adsorption, like the absorption. These organics, these biodegradable materials are adsorbed over the certain surfaces. The process involves passing the pre-treated wastewater through the beds of activated carbon. तो ये एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर में ये चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब जैसा एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्ब्स होते हैं, एंड देन द रिमेनिंग वेस्ट वाटर इज लेट आउट और टेकन फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट. Deionization, again passing the wastewater to the beds of the synthetic ion exchange regions where some undesirable cations or the anions of the wastewater get exchanged for the sodium or hydrogen ions of the resin. Okay, so again deionization, like the electrodialysis, osmotic pressures, etc., osmosis, वैसे deionization one of the method used again for the. Then thermal reduction requires burning and consequent oxidation of the some toxic and refractive substances. Thermal reduction, like the organic cyanide, which may be present in certain specific industrial waste. Thermal reduction. Now the air stripping. In air stripping, the liquid waste is poured down through a packed tower equipped with air blower at the bottom. This method is modification of aeration process used for removal of the gases from the wastewater. जो लिक्विड वेस्ट है वो टावर में से नीचे छोड़ते हैं. बहुत बार हम इंडस्ट्री के बाहर, कूलिंग प्लांट भी इसी टाइप से रहते हैं, equipped with air blower at the bottom, and it gives air or oxygen to that waste, and also it is useful for the removal of some unrequired unwanted gases from the wastewater. Thermal pollution, बहुत बार एखादे थर्मल पावर प्लांट है ना, जैसे कोराडी का थर्मल पावर प्लांट है, तो उसमें वेस्ट वाटर के साथ में गर्म पानी भी बाहर निकलता है, एंड दिस हॉट वाटर प्रोड्यूसेस, if it is let out into the flowing streams, etc., or is given to the plants, etc., then they will kill the plants. It is dangerous for the agriculture as well as the fishiculture or aquaculture. It is generally we get it from the nuclear power plant. I have seen it from the Koradi thermal power plant also. Steel mills, oil refineries, paper mills, etc. तो क्या करना है फिर इन दिस केस? देयर आर लॉट ऑफ द कूलिंग पॉइंट्स, है ना, आपको कोराडी के पास में बहुत बड़े बड़े तालाब दिखते हैं, तो दे आर नथिंग बट द कूलिंग पॉइंट्स. दे सर्व टू पर्पस. They cool the water from the wastewater, hot water, as well as they are used to store the fly ash also in wet form. Fly ash को भी गीला करके वो पॉन्ड में रखते हैं, तो उसको एश पॉन्ड भी बोलते हैं या उसको कूलिंग पॉन्ड भी बोलते हैं, wherein the hot water is collected and cooled before it is released into nearby water body. Cooling towers are also constructed and used in the modern days to dissipate the heat energy before releasing the wastewater to avoid its hot water discharge. And now there are various biological treatment. In addition to our conventional treatment, है ना, by giving all these physical, chemical treatments, etc., some certain electrodialysis, etc., ionization, thermal treatments, biological treatments are also necessitated, because
the industrial wastewater also contains, may also contain, है ना, कोई एक आधी इंडस्ट्री है जो इट प्रोड्यूसेस सर्टन ईटिंग मटेरियल्स, ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है, कुछ और चीजें बनाती है खाने की। आजकल तो बहुत आपको रेडी पोजीशन वाला मटेरियल मिलता है, तो उसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस are used, or certain vegetables are used, certain eating materials are used. So such waste from such industries need the biological treatment, like the trickling filter activated sludge process we have learnt earlier, sludge digestion tanks, etc. In addition to this, acclimatized microorganisms are also employed biological processes like the aerated lagoons. Certain more microorganisms can be added for the more decomposition. Anaerobic lagoons, oxidation ditches are used. We have seen earlier. What are the anaerobic lagoons? Oxidation ditches are used for the treatment of industrial waste. Again, laboratory test on wastewater to find out the BOD to COD ratio will help in determining the treatment required. If this ratio is more than 0.6, then biologically treatable without acclimatization, यहाँ पे जो हमने acclimatized बोला था, certain addition of the microorganisms, and if this ratio is less than 0.6 and up to 0.3, then acclimatization is needed, and if ratio is less than 0.3, biological treatment may not be necessary. What is acclimatization? Acclimatization consists of the gradual exposure of the wastewater in increasing concentration to the seed, that is bacteria seed or initial microbiological population under control condition may differ for different types of the industrial wastewater, है ना। ये acclimatization के ऊपर में भी नोट आती है एक आधे बार. So it is nothing but a exposure of this wastewater to certain microbiological organisms to increase their population, to increase their concentration under controlled condition may differ for different types of the industrial wastewater. So this is the biological treatment which involves all the other trickling filter, activated sludge process, sludge digestion tank, and this acclimatization. Acclimatization very important. ठीक है, before treating all that BOD, COD is necessary to find out all other properties so that which type of the treatment is to be given. BOD to COD ratio is found out so that whether that wastewater needs the acclimatization or not, that is to be seen. ठीक है, so this is the biological treatment. So friends, here we are finishing our this unit. Some discussion about the septic tank that we have done earlier, so no necessity to move further. Here we are finishing our unit number 5. Next time we will start with